तुझे मैम हियर भाई थोड़ा पीछे हो जा। It's okay, just look scared like right now. Yeah. Hi, dude. Should we go, dude? Oh, okay, okay, oh, his heart is beating so hard. Guys, well, it's been a pleasure being associated with Rules, and I think it's a great initiative that they are doing. Dogs in general and pet food and animals are so close to my heart. And Rules being like fully nutritionist and made with real chicken. Oh, Duke. Your baby Duke is getting scared. Can you just take him for a sound? Yeah, it's very loud for him. Aww. Is super nutritious for them because it's made of real chicken and my Bruno loves drools, so I guess it's tasty for them too. And I'm really happy that Drools is doing this. So they're taking care of 6 months of nutrition for stray dogs, and 6 months thanks to Drools I get to donate 6 months of food also. So it's just a great initiative. I would suggest that everybody, if possible, try and adopt dogs as much as possible. Help feed them whenever you see a stray dog. I think that's something that we always do. Even when I'm shooting and हमारी जो vanity van रहती है, जब जब भी parking जहाँ park होती है, तो हमेशा there are 2-3 dogs that are just hanging around और हम उन्हें खाना देते हैं. तो it's really important to just do these small things because just little bit of kindness can go a very very long way. एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी हो सके उनकी मदद करें, क्योंकि फूड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए. बहुत ही मैल न्यूट्रिशन रहते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी ड्यूक बहुत ही डरा सा है, क्योंकि बिकॉज दीज आर रेस्क्यू डॉग्स, देव गॉन थ्रू अ लॉट. तो इट रियली हेल्प्स जब हम उन्हें थोड़ा प्यार दे और थोड़ा मतलब a little bit of affection can go a long way. So glad to be part of Drools, guys. Thank you for making me come here today. And I think animals are best friends for humans, so let's just
do up bit of being their best friend and make sure that उनको जो चाहिए वो मिलेगा in terms of food especially, right? Thank you. Can we have that thing with Pooja holding? Pooja, yeah. चेक मीडिया वालों को भी बहुत थैंक यू कि आप यू नो यू ऑल रिमूव सम टाइम फ्रॉम आपके जो बिजी स्केड्यूल्स है टू कम एंड कवर दिस इवेंट, क्योंकि क्या है कि आपके पास बहुत पावर है इन टर्म्स ऑफ कि आप जो छपेगा, जो आप पोस्ट करोगे, पीपल टेक इट वेरी सीरियसली, यू नो. अगर एक आउटफिट को लेकर लोग मतलब दे कैन लुक एट आउटफिट एंड बी लाइक आई वांट टू बाय इट. सो थैंक्स टू यू ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक पीपल वी कैन रीच. तो अगर आप इस इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, पोस्ट करेंगे, सो पता नहीं कि कितने सारे लोग मे बी इंस्पायर हो जाएंगे, या एटलीस्ट उनके माइंड में एक एजुकेशन जो है वो कुछ सीखेंगे कि लाइक यू नो ओके इफ एक स्ट्रे डॉग पास कर रहा है, उनको कुछ बिस्किट्स देना हो या खाना देना हो. सो इट्स स्मॉल थिंग्स दैट कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस. तो इफ़ यू गाइज कैन टॉक अबाउट इट तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक लोगों को एक एजुकेशन मिलेगा, and they might small, like I said, small acts of kindness can, I believe, can change the world, and you all have that power. So thank you for coming here, guys. And a big thank you to World for All, which is the Animal Care Adoption Center. They really are doing a lot for adoption for dogs and animals in general. I feel like mera kuch, I think there's some connection with all adoption agencies. During Miss India, my charity organization which I supported was also adoption, but of course children. And now I'm here to talk about animals. So I think it's something that is very close to my heart. And good job, guys. Thank you. So guys, Pooja will show some products of drools that they are offering for animals, and we can just go ahead by showing some kind of variety that they have. Well, quickly, yes. Like calcium, I don't need to explain it to you guys, but my Bruno loves this one, calcium bones. These little treats are how I get him to, train himself. There's Power Bites, which is again made with real chicken. They're like strips, the same thing in a different form. This is drool schema, jo is again very delicious because a lot of dogs don't like dry food, which is what this is. So unko, yeah, like if you mix this with that, it tastes good. So I think what's great is that Drools is not only thinking about nutrition, but they are paying attention to the taste of the food also, because I mean, everybody loves tasty food, and animals are the same. So it's great that they're thinking about all these things. Yep, that's it. So guys, you guys can ask questions. We are open for questions, and she would love to answer. Yes. Any questions? आपके पास तो हमेशा कुछ 10 क्वेश्चन रहते हैं.
हाँ नहीं बाइट्स नहीं ना, ग्रुप ही है ना. में बहुत ही कम लोग आते हैं. आप आए एंड आप जैसा कि हम सभी को बताया कि 6 मंथ के फ्रूट्स भी आप, सो क्या फीलिंग होती है एंड क्या कहना चाहेंगे आज के इस इनिशिएटिव के बारे में? वही तो मैं कह रही थी कि इट्स बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कहते हैं कि लाइक यू नो देयर मैन्स बेस्ट फ्रेंड डॉग्स और एनिमल्स इन जनरल. हमें थोड़ी काइंडनेस दिखानी चाहिए उनकी तरफ. एंड आई एम हैप्पी कि ड्रूल्स ने ये इनिशिएटिव लिया है. एंड रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद ड्रूल्स, क्योंकि क्या है कि वो न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं, टेस्ट पे भी ध्यान देते हैं. एंड माई ब्रूडो एक्चुअली लव्स ड्रूल्स. सो इट्स ग्रेट, क्योंकि लोग सोचते नहीं हैं इसके बारे में कि स्ट्रे डॉग्स के बारे में अडॉप्ट करना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए. एंड इट्स ग्रेट टू सी दैट ड्रूल्स हैज़ डन इट. येस, हैप्पी टू बी हियर. एंड जैसे कि हमारे आपके यहाँ पे सपोर्ट से एंड हमसे भी जो होता है, आप चाहेंगे कि आपके और भी जो करीबी दोस्त हैं इंडस्ट्री में वो भी आएँ जिनसे और भी मैसेज जाता है? 100%. जैसे कि मैंने कहा कि जो मीडिया और मीडिया के साथ एसोसिएटेड जो है, मतलब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मीडिया देमसेल्व्स, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में मे बी शेयर करेंगे, तो लोगों को एक एजुकेशन मिलता है उसके बारे में. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द स्मॉल थिंग्स दैट काउंट. मतलब इवन इफ इट इज़, आई एम सेइंग कि जो इनिशिएटिव, जो रूल्स कहना चाहता है या दे वांट टू पुट अक्रॉस इज़ दैट अगर आप एक स्ट्रे डॉग को रास्ते पे चलते हुए देखेंगे तो आप उनके तरफ थोड़ा काइंडनेस दिखाएंगे. आप मे बी खाना देंगे उनको, बिस्किट्स या कुछ खाना, न्यूट्रिशनल चीज़ देंगे जो इट विल हेल्प देम टू सर्वाइव. एंड I think it's very important. So if you guys can share, talk about it, that's why I am here, to just raise awareness about this. और मुझे इसके साथ में कई बार जैसे हम देखते हैं आए दिन जिस तरीके से वीडियोस आते रहते हैं, कुछ लोग डॉग्स को मार रहे हैं, कुछ पीट रहे हैं. हाँ. क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो उनको डॉग्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते? मतलब I just feel कि violence in general is something that I do not support, whether it is towards animals. But I just think कि अगर कोई उनके साथ ऐसा करे तो उनको पसंद नहीं आएगा. So why do something to someone else which you wouldn't like doing to yourself, you know? So I would suggest these people need to get educated about violence in general, but I don't think they should treat animals that way, क्योंकि हम at least बोल सकते हैं, रो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो we can communicate to people, but they have no other option, you know. So I have never seen an animal really behave violent unless he's hungry. And agar you know, and that's the law of like nature in general. Animals don't attack just like that. They only search for food. And if you just feed them, they are the most lovely things, you know, to be associated with, the love that they give you back. So just give them love. Don't beat animals, hit animals. और अगर आप किसी को देखोगे भी to do, you know, who does something like that on the road, I would suggest tell them to stop, because that's the only way the message gets spread. Pooja, climate change has become a big problem, as we all know, for the entire world. अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ हमने सब देखा. Lot of koalas, lot of other animals also were, you know, suffered a lot because of the fires that took place in the forest. जिसमें थोड़ा human activity was also involved. Correct. How important is it to you know, for humans to understand that you know, it's affecting the climate and ultimately eventually it's affecting the animals also in the forests? What are your views on the entire thing that happened? I mean, you've covered everything basically, but I just think we need to be a little more careful. What's happening in Australia it's devastating. You know, when I see the images coming out of there, the animals, like, they're just suffering right now, and whatever can be done should to help, donations, whatever possible, yes. And I also believe, I mean, charity also starts at home.
So I think that we need to also take care of the animals in our own country. There are so many animals in extinction, and we should do our bit to support them and help them as much as possible. You know, हमें लगता है कि हमारे पास क्या है, जब हम पैसे बनाएंगे तब हम डोनेट करेंगे, लेकिन उसका कुछ एंड कैप नहीं रहता है ज़िंदगी में. यू नो, यू हैव टू डिसाइड कि इट्स अ कल्चर. जो डोनेशन है, हेल्पिंग आउट है, वो एक कल्चर रहता है. एंड वी शुड मे बी कीप इट इन आवर माइंड कि अगर 20 रुपये भी हो, 50 रुपये भी हो, अगर वो एक हैबिट हम स्टार्ट करेंगे कि वो जो एक कल्चर कि हाँ 50 रुपये मैं निकाल सकती हूँ, या 100 रुपये, या 10% ऑफ माई अर्निंग आई कैन डोनेट. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड कल्टिवेट इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल. मतलब अभी आपके पास और मेरे पास टाइम नहीं रहेगा ये सब करने के लिए, लेकिन अगर ड्रूल्स है या वर्ल्ड फॉर ऑल है, जो कुछ वो अपना टाइम निकालते हैं सिर्फ ये करने के लिए, दिस इज़ देयर जॉब. सो इफ़ वी सपोर्ट पीपल लाइक दिस, देन you know they will ensure that the funds are put in right way, because you and I don't have that opportunity कि हम पैसे है लेकिन क्या करें उसके साथ. So I think we should support whoever wants to make that change. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you so much for coming. Yes. Thank you. Always play with the park. Sorry, I'm distracted. As you can see with animals, but who's so sure what is going on? Who's this baby? So I've always been attached. I used to go and play with the cows and the calf and stuff, feed them. And जब मैं छोटी थी, my dad brought a dog home. My first pet. You know, I strongly believe that education has the power to change the world. In terms of that, it's that saying that you teach a man to fish for the lifetime rather than giving him a fish, you know. So I feel like if we spread awareness about it, you know, show them away nicely from this end. So it's a small thing that can happen. Do you think perhaps you would ever want to do a movie where there are dogs, or एक subject होगा dogs को लेकर, because you're an actress, you have that voice and you have the love for your dog, would you ever want to be in a movie with As long as he talks about it, that's good. Just coming down. one with the team. Oh my God! Thanks a lot Okay, for coming quickly. down Guys, and quick. working on it. Thanks a lot. It's my The pleasure, last, but last. quickly we'll take. Guys, take pictures with the team because my flight is going to get missed. कौन ले रहा है आप लोग? Is everyone here? No, just give me one. Sharmi. Yeah. Fit in. अभी यहाँ मेरा इनके साथ ले लेंगे. Thank you. पूजा एक सेकंड सर प्लीज कम गो वर्ड फॉर नाही Rules branding. नाही मी मीटिंगमधून आहे, डायरीसाठी पिक्चर पाहिजे. Come. See you. Bye. I'm going to run for my flight. Yeah. Thank you.